क्वेश्चंस वी ऑल शुड नो कि भाई ये जेनेटिक्स मुझे क्यों आनी चाहिए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे कितनी आनी चाहिए, हाउ मच शुड आई नो, एंड देन what is its application in real life, which I am having or we are all having as a dermatologist. These are the three things which we should know. Here I've been asking this question all the time. If we have to condense the causes of diseases into three boxes only. Okay, diseases have only three causes. So what could be those three causes in which you can include all the causes of every disease, and nothing should go out of these three boxes? Ji, Dr. Saif, I don't know. Can you tell me the three causes of diseases? Only three. Ji, Dr. Vanisha Devi, can you tell us? Can you think about it? Autosomal recessive, Okay. dominant, and जी, बहुत जोर से बोलें. Sex Infections, infections, recessive okay. and genetics, Genetics, infections, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे. and idiopathic होगा. तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना. हम तो कह रहे हैं कि सारे Yes. कॉजेज को आप तीन बॉक्सेस में कंडेंस कर दें. ओके, आई एम कमिंग टू इट. ठीक है ना. तो क्वेश्चन इज कि अगर हम दुनिया के तमाम बीमारियों के सारे कॉजेज को सिर्फ तीन हिस्सों में तकसीम करें तो वो हिस्से क्या होंगे? तो पहली बात तो ये है कि या तो डिजीज होगी जेनेटिक, acquired दूसरी होगी एक्वायर्ड और तीसरी होगी कंजेनिटल. जी सर चीजें हैं. अब कोई चौथा कॉज नहीं रहेगा. या तो वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होगी, या वो कंजेनिटल डिफेक्ट होगा, या बंदा बिल्कुल नॉर्मल होगा, बाद में उसे डिजीज हो जाएगी, तो यू विल कॉल इट एक्वायर्ड. देयर आर ओनली थ्री कॉजेज. नाउ द क्वेश्चन इज what is the difference between genetic disease and hereditary disease? Maryam bint Yusuf, what is your concept about it? One disease is genetic. Yes. No. Sir, Okay. anything Yes. that we acquire through our genes is That- genetic. Okay. And the other one? What about the inherited disorder then? Which is bigger one and which is the subset? Sir, hereditary is the subset. Yes, shabash. Or so what is the difference then between the two things, genetic and hereditary? Acha, okay. Let me tell you, देखिए, genetic is a broad term. Any disease which is pertaining to the genetic material, we call it genetic disease. Hereditary is a subset के those who run in the families or in the generations. So every disease may be genetic, but it may not be hereditary. It's a genetic problem, but it cannot be inherited. So can you give me an example, Madiha Kaleem ka disease which is genetic, but it may not be inherited? Can you think of a disease? Madiha Kaleem. जी. Madiha Kaleem. जी, मारिया गुल, आप जवाब दीजिए. syndrome, Down syndrome. यस, देखिए बहुत आसान सी बात है कि भाई डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक डिजीज, लेकिन ये जो है तीन कॉजेज है. जेनेटिक डिजीज होती है जो कि जीन से रिलेटेड है, कंजेनिटल जेनेटिक नहीं है, इट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, और एक्वायर्ड वो है जो कि बंदा नॉर्मल पैदा हुआ और बाद में हो गई है. अभी हम एक्वायर्ड को डिस्कस नहीं करते.